Hello my dear student, today study about rational numbers between two rational numbers. Suppose कोई दो rational number लेते हैं 2 and 5. In 2 and 5, how many rational number between 2 and 5? तो हम सिर्फ बोलते हैं कि 2 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं, एक 3 है और एक 4 है. तो हम सिर्फ बोलेंगे यहाँ पर कि द रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 5 आर 3 and 4. बट यहाँ पर सिर्फ दो ही रेशनल नंबर नहीं है, यहाँ पर 2 and 3 बीच में एक और रेशनल नंबर मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे 2.5 मीन्स 25/10. यहाँ 25/10 ये भी एक रेशनल नंबर है. तो सिर्फ द रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 5 is not exactly 3 and 4. There are so many rational number between 2 and 5. Infinite number of rational number between two rational numbers, uncountable rational number between two rational numbers. But how can find the rational number between two rational numbers? हम कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकालेंगे. तो कैसे निकालना है, चलिए देखते हैं एग्जांपल. एक मेथड होता है मीन मेथड, जिसको हम अनदर नेम से बोलते हैं एवरेज मेथड. इसमें सपोज इफ ए एंड वी आर टू रेशनल नंबर्स, एक ए और बी टू रेशनल नंबर्स है, और इसके बीच में एक रेशनल नंबर हमको निकालना है, जिसका क्या वैल्यू होगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. ए और बी टू रेशनल नंबर है, उसके बीच में हमको एक रेशनल नंबर निकालना है. उस रेशनल नंबर को बोलेंगे मिडिल रेशनल नंबर. तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2. तो इस मेथड को बोलते हैं मीन मेथड और एवरेज मेथड. तो वी फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर बाय मीन मेथड. और अनदर मेथड we solve the examples from example number 6 to example number 9. Example number 6, write any three rational numbers between -2 and 0. Any three rational numbers between -2 and 0. We find these examples. Any three rational numbers between -2 and 0. Here -2, here 0. -2 and 0, इसके बीच में सिर्फ एक ही हमको लगता है कि -1 है, लेकिन वी फाइंड द रेशनल नंबर, थ्री रेशनल नंबर्स एनी बिटवीन -2 and 0. वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्व -2 and 0 can be written as -2 is equal to -2/1 and 0 is equal to 0/1. Here -2/1 and 0/1. We have to find any three rational number between -2/1 and 0/1. Multiply by 10 both rational numbers on numerator and denominator. Here -2 is equal to -2/1 and 0 equal to 0/1. Multiply
by 10, both rational numbers minus 2 upon 1 and 0 upon 1 on numerator and denominator. Minus 2 upon 1 equal to minus 2 into 10 upon 1 into 10 is equal to minus 20 upon 10, and 0 upon 1 equal to 0 multiplied with 10 upon 1 multiplied with 10 equal to 0 upon 1 10 ja 10. We find any three rational number between minus 2 and 0, but हम यहाँ से जैसे हम मल्टीप्लाई 10 कर रहे हैं, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 5 भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 6 भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 20 भी कर सकते हैं. तो हम ये सिंपल मल्टीपल्स ऑफ 10 ले रहे हैं, तो 10 ले सकते हैं, या तो 100 ले सकते हैं, या 1000. तो माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 10 इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 10, एंड 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0 multiply with 10 upon 1 multiply with 10 equal to 0 10 is 0 and 1 10 is 10. So minus 20 upon 10 and 0 upon 10. Any three rational number between minus 20 upon 10 and 0 upon 10. There are so many rational numbers between minus 20 upon 10 and 0 upon 10. Therefore the three rational numbers between minus 20 upon 10 and 0 upon 10 are any three rational number: minus 19 upon 10, minus 18 upon 10, and minus 17 upon 10. There are so many rational numbers between minus 20 upon 10 and minus 0 upon 10. Minus 16 upon 10 is also minus 15 upon 10, minus 14 upon 10, minus 13 upon 10, minus 12 upon 10, minus 11 upon 10, minus 9 upon 10. These are rational number between minus 2 and these are rational number between minus 2 and 0. So we see the next question. Number 7. Find any 10 rational numbers between minus 5 upon 6 and 5 upon 8. एग्जाम्पल नंबर 6 देखें, जिसमें जो रेशनल नंबर था वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर जैसे था, जैसे माइनस 2 एंड 0. लेकिन यहाँ पर फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन माइनस 5 upon 6 and 5 upon 8. Here negative rational numbers and positive rational numbers minus 5 upon 6 and 5 upon 8, and both rational numbers have different denominator. So first we have changed both rational number having same denominator, means we find the LCM of 6 and 8. So LCM of 6 and 8 is 24. 24 is the common multiple of 6. So we change this minus 5 upon 6 and 5 upon 8 having the same denominator 24. Minus 5 upon 6 is equal to, we multiply by minus 5 upon 6, we multiply by in number on minus 5 upon 6, we get denominator is 24. ये 24 का टारगेट क्या है, हमको इसके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 24 करना है. तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24. वी मल्टीप्लाई बाय 4 और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो माइनस 5 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 4 इक्वल टू 5 4 जा minus 20 upon 24. Next is here 5 upon 8. 5 multiply with and 8 multiply with equal 8. इसके डिनोमिनेटर को भी 24 करना है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 and 5 3 जा 15 upon 24. हमको दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है सेम नॉन जीरो नंबर से. तो इसके डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ गए यहाँ पर. बोथ फ्रैक्शन चेंजेस इनटू
equal denominator here 24. So we find the rational number between minus 20 upon 24 and 15 upon 24, but here minus any 10 rational numbers. There are so many rational numbers between, like minus 19 upon 24, minus 18 upon 24, 6 minus 16 upon 24, minus 15 upon 24, 0 upon 24, 1 upon 24. These are rational number between minus 20 upon 24 and 15 upon 24. Therefore, the 10 rational numbers between minus 5 upon 6 and 5 upon 8 are minus 19 upon 24, minus 18 upon 24, minus 17 upon 24, minus 16 upon 24, 1 upon 24, 2 upon 24, 3 upon 24, 4 upon 24, and 5 upon 24, and the last one, and 6 upon 24. There are so many rational numbers between minus 20 upon 24 and 15 upon 24. So therefore the 10 rational numbers between minus 5 upon 6 and 5 upon 8 are minus 19 upon 24, minus 18 upon 24, minus 17 upon 24, minus 16 upon 24, 1 upon 24, 2 upon 24, 3 upon 24, 4 upon 24, 5 upon 24, and 6 upon 24. Next, we see the next question. Example number 8. Find a rational number between 1 upon 4 and 1 upon 2. Find r rational numbers. R rational means one rational number between 1 upon 4 and 1 upon 2. Between बोलना मतलब exactly one rational number who lies 1 upon 4 and 1 upon 2 means middle rational numbers. So we find the middle rational number between by average method. By average method, suppose here 1 upon 2 and 1 upon 4. We find the rational number between mid rational number between 1 upon 2 and 1 upon 4 by average method. Solve by average method. The rational number between a and b equal to a plus b upon 2. So a is equal to here 1 upon 2 and b equal to 1 upon 4. So a rational number between 1 upon 2 and 1 upon 4 equal to 1 upon 2 plus 1 upon 4 whole divided by 2. Then 1 upon 2 plus 1 upon 4 कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 1 upon 2 plus 1 upon 4, we solve this sum by on cross multiplication. 1 multiply with 4, then plus 1 multiply with 2, then again 2 multiply with 4. तो 1 4 जा 4 plus 1 2 जा 2 upon 2 4 जा 8 divided by 2 is equal to 4 plus 2 6 upon 8 divided by 2 equal to 2 3 जा and 2 4 जा 3 upon 4 divided by 2 equal to 3 upon 4 divided by 2 means multiply with 1 upon 2. We change this divided into multiplication, then we find the reciprocal of 2 means 1 upon 2
equal to 3 1 ja 3 and 4 2 ja 8. This is the first method to find a rational number between 1 upon 4 and 1 upon 2. Here find a rational number means exactly mid rational number between 1 upon 2 and 1 upon 4. If question asks find any rational numbers between 1 upon 4 and 1 upon 2, we use the another method. Here a rational number, so we find the middle rational numbers. We see the next question. Example number 9. Find 3 rational numbers between 1 upon 4 and 1 upon 2. We find the 3 rational number between 1 upon 4 and 1 upon 2. We know that there are so many rational numbers between 2 rational numbers. So how can solve this question? Solve 1 upon 4 and 1 upon 2. Here different denominator 4 and 2, so we make 1 upon 4 and 1 upon 2. Change the both fractions having same denominator. First we change the both fractions 1 upon 4 and 1 upon 2 having same denominator. So 1 upon 4 and 1 upon 2, here LCM of 4 and 2 is 4. 4 is the smallest common multiple of 4 and 2. So we change first 1 upon 4 into their denominator having 4. In 1 upon 4, here denominator is already 4, so we multiply 1 upon 1, 1 into 1 upon 4 into 1 equal to 1 upon 4. And next one here 1 upon 2 equal to, we change the denominator 1 upon 2 equal to 4. So 1 is multiplied with 2 upon 2 is multiplied with 2 equal to 1 2 ja 2 upon 4. Here the rational numbers are 1 upon 4 and 2 upon 4. अब यहाँ पर 1 upon 4 and 2 upon 4 आ गया, बट क्वेश्चन पूछा है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 upon 4 and 1 upon 2. सो वी कैन फाइंड 3 रेशनल नंबर्स. तो हमको ऐसा लग रहा है कि 1 upon 4 and 2 upon 4 दिया है, तो इसके बीच में कोई भी रेशनल नंबर्स नहीं है. वी मल्टीप्लाई बाय 10 on numerator and denominator of both rational numbers. When you multiply by 10 on numerator and denominator of both rational numbers 1 upon 4 and 2 upon 4, तो 1 upon 4 is equal to 1 is multiplied with 10 upon 4 is multiplied with 10. और यहाँ 100 से भी कर सकते हैं, 200 से भी कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं. तो 1 10 जा 10 upon 4 10 जा 40. नेक्स्ट वन हियर 2 upon 4 equal to 2 into 10 upon 4 into 10. Then 2 10 ja 20 upon 4 10 ja 40. So any three relation between 10 upon 40 and 20 upon 40, we know 10 any three relation between 10 upon 40 and 20 upon 40 are like 11 upon 40, 12 upon 40. Therefore the three rational numbers between 1 upon 4 and 1 upon 2 are 11 upon 40,
12/40 and 19/40 in three rational numbers. So we find the rational number between two rational number by main method, and also we change the rational numbers to rational numbers having the same denominator, then we multiply by any numbers like 10, 100, 200, 50, 20. So according to question we find the rational numbers. जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द 10 रेशनल नंबर्स, फाइंड द 12 रेशनल नंबर, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स, तो पहले रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स को इक्वल्स डिनोमिनेटर्स रेशनल नंबर में चेंज करेंगे। अब उससे अगर नहीं निकल पा रहा है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10, 100 या 20 या 12 या 50 और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ रेशनल नंबर। फिर उसके बीच के रेशनल नंबर्स को हम निकाल लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।